Hello everyone, I am Laksh and today we are going to have a quick revision of Chapter 6 Learning. Any relative permanent change in behavior produced by experience is learning. हमारे past experience, अनुभव से लाए गए हमारे behavior, व्यवहार में changes को हम learning कहते हैं। आइए learning के कुछ features को समझते हैं। Learning always involves some kind of experience. Sometimes a single experience can lead to learning. सपोज एक छोटे बच्चे का लाइटर को गलत जलाने की वजह से हाथ जल जाता है तो इस बात का एक्सपीरियंस लेकर के वो आगे से लाइटर को सही तरीके से जलाएगा। लर्निंग इज चेंज इन बिहेवियर नो मैटर इट्स फॉर बेटर और वर्स। लर्निंग फॉलोज अ सीक्वेंस। पैराडाइम्स ऑफ लर्निंग। लर्निंग का सबसे सिंपलेस्ट तरीका है कंडीशनिंग। ये दो तरीके की होती हैं, क्लासिकल कंडीशनिंग एंड ऑपरेंट कंडीशनिंग। इसके अलावा कुछ एडिशनल लर्निंग्स भी हमें पढ़ना होगा, लाइक ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, कॉग्निटिव लर्निंग, वर्बल लर्निंग, कॉन्सेप्ट लर्निंग एंड स्किल लर्निंग। लेट्स स्टार्ट विथ क्लासिकल कंडीशनिंग। क्लासिकल कंडीशनिंग को सबसे पहले पेवलोव ने एक एक्सपेरिमेंट के जरिए एक्सप्लेन किया, जिसमें उन्होंने डॉग को एक हार्नेस में रखा और ट्यूब लिया जिसका एक एंड डॉग के जॉ में अटैच था और दूसरा एंड मेजरिंग जार में। एक्सपेरिमेंट के दौरान डॉग को भूखा रखा गया और जितनी बार भी उसे खाना दिया गया तो उससे पहले एक बेल बजाई गई। कुछ टाइम बाद डॉग को इस कंडीशनिंग में बिलीव हो गया कि अगर बेल बजी है तो फूड आ रहा होगा। सो whenever the bell rings, dog starts salivation. Now the dog continued to salivate even when the food was not given after bell. That is classical conditioning. Various forms of classical conditioning are conditioned stimulus, unconditioned response, and conditioned response. Now come to operant conditioning, explained by B.F. Skinner. Operant conditioning is a form of learning in which behavior is learned, maintained, or changed. This learning process occurs through reward and punishment for behavior. इसको समझाने के लिए स्किनर ने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें उन्होंने एक रैट को एक स्पेशल बॉक्स में रखा, नेम्ड एज स्किनर बॉक्स। उसमें रैट को एक्सपेरिमेंट कोर्स में भूखा रखा गया और इस बॉक्स में ये जो लीवर है इसको प्रेस करने से फूड डिस्पेंसर के थ्रू इसे खाना मिल सकता है। सो व्हेन द रैट एक्सीडेंटली प्रेस द लीवर द फूड अपीयर्स। तो इसके बाद रैट ये लर्न कर लिया कि अगर वो ये बिहेवियर रिपीट करेगा तो उसे रिवॉर्ड मिलेगा। Here the action of pressing lever is an operant behavior, and the food released inside the chamber is reward. Determinants of operant conditioning. Reinforcers. It can be defined as an event which increases the probability of the occurrence of desired response. Like getting the food on pressing the lever is desired response for rat. Types of reinforcement. Positive and negative. Positive reinforcement involves stimuli that have pleasant consequences. Negative reinforcement involves unpleasant and painful stimulus. Number of reinforcement, that is, how much of reinforcing stimulus, like food or water, subject receives on each trial. Schedule of reinforcement. This refers to the arrangement of delivery of reinforcement during trials. Delayed reinforcement. It is found that delay in the delivery of reinforcement lead to the poor level of performance. Key learning processes. Learning involves occurrence of certain processes like reinforcement, extension, generalization and discrimination, and spontaneous recovery. The reinforcers may be primary or secondary. Primary reinforcers facilitate the basic biological needs like food, water, air, sleep, etc. Secondary reinforcement is associated with primary reinforcement. For example, food is primary reinforcement and money buys food. Therefore, money in this case is secondary reinforcement. Now come to extension. Extension means disappearance of learned response due to removal of reinforcement from the situation. For example, if lever pressing is no more followed by food in Skinner box, then the learned behavior will gradually be weakened and ultimately disappear. Generalization and discrimination.
Generalization occurs when organisms make the same response to different stimulus. फॉर एग्जाम्पल, एक चाइल्ड ने एक सर्टेन शेप और साइज के जार को लोकेट कर लिया है और वो उसी से स्वीट्स निकाला करता है। पर एक दिन उसकी मम्मी ने स्वीट्स को डिफरेंट शेप, साइज और कलर के जार में रख दिया। फिर भी चाइल्ड ने लोकेट कर लिया कि स्वीट्स किस जार में होंगी। Here the child makes the same response to two different stimulus. Discrimination. The opposite of generalization is discrimination. It occurs when an organism responds differently to two different stimulus. For example, a child shows a sign of fear in front of a man with long mustache and black earring, but shows no sign of fear in front of a man with blue earring and clean shave. That's how the child responds differently to two stimulus. Now, spontaneous recovery. Spontaneous recovery occurred after the learned response is extinguished. After the extension of learned stimulus, some duration of rest is given, and then the spontaneous recovery of learned response occurs.